हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मृणालिनी माड। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आज की वीडियो में मैं आपको हिमाचली फफरू के साग के बारे में बताऊंगी। एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू शो यू इट्स रेसिपी। फफरू को इंग्लिश में पेरिनियल बकवीट और हिंदी में बन ओगल कहते हैं। लाइक कसरोड़, ये एक सीजनल सब्जी है जो बारिश के मौसम में उगती है। In Chamba, it usually grows in the wild in shady areas near water. It can also grow in nutritionally poor soil. ये पूरी तरह ऑर्गेनिक है, इसमें कोई भी फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज नहीं होता। It is found in the Himalayas in Bhutan, Kashmir, Myanmar, Nepal, Sikkim, Vietnam, and it is cultivated in the areas of Pakistan, China, and Thailand. It has a lot of nutritional and medicinal benefits. The stems of this plant give it a sour taste. It is rich in fiber, जिससे ये डाइजेशन में हेल्प करता है। Let's come to the recipe. These are the ingredients for the recipe. इसमें हम काले चने भी डालेंगे to balance the flavors as it is naturally sour in taste. Soak chana in warm water overnight. फफरू को अच्छे से धो लें। धोने के बाद ज़्यादा पत्ते निकाल लें और कुछ पत्ते रहने दें। The stems we will use to make साग और बाकी के पकौड़े बनाने में यूज कर सकते हैं। Finally chop the फफरू। चने को प्रेशर कुकर में 3 से 4 विसल दें। Check if चने is cooked. 2 चम्मच सरसों का तेल कढ़ाई में गर्म होने के लिए डाल दें। Now turn the stove off for some time to avoid the masala from getting burnt. Now turn the stove on again. और पानी डाल के हीट कम कर दें। स्लो फ्लेम पे कुक होने दें। नाउ द फफरू का साग इज रेडी।